legal education, the EduLaw close the gap between theory and practice. We bring business knowledge into the world of legal education, making it simpler, quicker, and more affordable to master the practical skill. You need to interact with the client more effectively, swiftly, and economically. We are constantly updating our legal dictionaries, legal icons, legal court, discussion, forums, code, and important cases. You can just check our website. The link has been posted in the comment section. We proudly welcome today's speaker of this webinar, Advocate Prateek Harsh sir. Advocate Prateek Harsh sir is a managing partner at Virginia Solicitor and Associate. He is also a privacy professional and international contract lawyer. He is expert in intellectual property law and is specialized in trademark law. No, if we add more, he has also co-authored, no, sorry, I'm sorry. He has authored Wisdom to Intellectual Property Law, the book, which is the best-selling and has been listed one of the top 5,000 bestseller law book on Amazon. So over to you, sir. First of all, thank you everyone for joining us for this session on a weekend. Good evening, everyone. Thank you, Kamlesh, for such a brief introduction and such a nice introduction. So in today's webinar, we'll be talking about the trademark laws in India, how to create a practice of trademark law in India and abroad both. So shall we begin with the presentation? If everyone is ready, please type yes in the chat box. Yes, sir, we are ready. Please start. Sure. So I'm sharing my presentation. Please let me know, everybody. Can you see my presentation, everybody? Yes, sir. Okay. So we'll just wait for 1 minute. I think so people are joining because I can see the pop-up coming on my screen right now. Okay, let's go ahead. So in today's webinar, we'll be talking briefly about this content. The very first thing is introduction to trademark. We'll teach you what is trademark law, what are different types of trademarks, and how you can do your comprehensive search. Why conducting search is very important for filing your trademark. After that, we'll cover the brief procedure of how to file a trademark in India. We'll guide you through the IP India website. What are the different forms, procedures, etc. What are the protocols which you need to keep in mind while filing the trademarks? And in the fourth point, we'll be covering about the trademark objections. So basically, whenever you file a trademark, there is an objection from the side of the registrar, mostly under section 9 and section 11. So we'll be talking about the objection and how to cater those objections. What are the best practices you must follow while you're trying to cater the trademark objection. And in the last topic, we would be talking about the trademark filing in USA. Okay. So I think so I'm clear with everyone. Does anybody have any doubt, or we can move ahead? Please type yes or no. Okay. So let's moving forward. What is trademark? So trademark provides an protection to the owner of the mark by ensuring the exclusive right of use it to identify the goods and services or to authorize other to use it in the return of the payment. So basically what happens? Trademark कराने का फायदा क्या है? When you do a trademark, आपको एक particular name market में establish हो जाता है. Your goodwill gets established in market. Whenever, for example, when I see a trademark of Philips, when I see a logo of Philips, when I see a logo for an Apple, I know this
the brand pertaining that logo would have a greater quality. Whenever we talk about कि अच्छा भाई Samsung का product है, how do you identify? Just by seeing the logo. That's their trademark. That is their service mark. कि किस name के अंदर वो काम करते हैं. That is very important. Trademark establishes your goodwill in the society. So basically, what are the after this? What are the functions of the trademark? So functions of the trademarks are not only limited to these three functions, but I'll tell you in the brief. Very first thing, it establishes your goodwill in the market. So what happens is that when you file a trademark, you get a recognition from the government that yeah, this brand is a recognized brand, this brand is a certified brand, and this is not infringing the practice of any other brand, etc. in the market. Secondly, it also establishes the quality, the type of goods you are dealing. Like supposedly, for example, if I talk about Apple in my mind, automatically I portray about the MacBooks and iPhone. Supposedly, if I talk about Philips in my mind goes towards Philips lights, Philips bulbs, etc. So these are the examples, like how trademark helps you. First, secondly, trademark also assures the quality of the product, a symbol representing goodwill. Okay, I'll give you an example. So suppose trademark, when you do a trademark, there are different categories. Okay, so when we are talking about the categories of the trademark, there are product mark, service mark, word mark, device mark, color mark, sound mark, shape mark, smell mark. So these are the different you can call it the categories of the trademark under which one can establish a trademark. For example, if I talk about the shape of the mark, you have seen the Coca-Cola bottle. If whenever you hold a Coca-Cola bottle, you can just relate from your just touch that, yeah, this is a Coca-Cola bottle. For example, you all must have eaten the Toblerone chocolate. So whenever you see that Toblerone chocolate, or when you feel that Toblerone chocolate, you can easily establish that, yeah, this is Toblerone chocolate. So the shape of the trademark is very important, and even it is protected. Now we talk about the sound mark. So what is sound mark? You all must have heard about the Netflix Doodle, Yahoo Doodle. So these all like a specific sound which helps you to identify the acha. Windows start hua to you get that doodle sound. Yahoo ka mail aata, you get that doodle sound. Whenever Netflix start bloom, there's a sound like that. So all these kinds of identification which establishes a image in the mind of the consumer that acha ye inka product hai, ye inka आवाज hai. So that can also be safeguarded. स्मेल मार्क इंडिया में अवेलेबल नहीं है, but there is a very famous US case law जहाँ पे टायर्स को यूज किया गया था, उसमें फ्लोरेसेंट स्मेल्स अटैच किया गया था. So that is a very special case which is actually related to US. And even now, if we talk about the color mark, so basically what is color mark? You all have seen the Cadbury logo. There's a particular purpose establishment on the every Cadbury products which you go ahead with. So that's an example of a color mark. If we talk about the device marks, so all the marks which are established as a logo, okay, so it can be colored, it can be black and white, it is filed under the category of device mark. Word marks are basically anything, like supposedly I want to register my name Pratik. So even though it cannot be registered, just giving an example, if I want to register my name Pratik as a trademark, okay, so this will fall under word mark. Anything which is just a word which is just written in letters, so that falls under the category of word mark. Now we talk about the service mark. So what is service mark? I think so सबने सुना होगा, FSSAI recognized है, ISI recognized है, कुछ ISO certification है. तो ये जो एक पर्टिकुलर क्लास और सर्विस में फॉल करता है, दैट इज अ सर्विस मार्क, जो बताता है कि आपका गुड एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, दैट्स अ सर्टिफाइड क्राइटेरिया, एंड दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विस मार्क. So everybody is with me? Can we move ahead? Can everybody type yes or no in the chat box? Okay. Now, when we talk about the trademark, one of the very important thing which every startup should focus upon before getting their company registered is thinking about the name. The thinking of the procedure of deciding the name of the trademark is the one of the most inherently important procedure which in India most of the companies don't follow. That is why at the time of trademark registration they fall under the objection or opposition from registrar or from the third party. So basically, what are descriptive marks?
ऐसा मार्क जिसको पढ़ के समझ में आ जाता है कि आप क्या काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज देखो, कार देखो, फिश फ्राई, दीज आर बेसिकली मार्क्स जो डिस्क्राइब करते हैं आपके सर्विस को, आपके आप क्या कर रहे हो काम को, what you are presenting, what you are giving, what you are manufacturing, anything etc. So these marks fall under the criteria of non-suggestive mark. Descriptive marks are non-suggestive marks. ऐसे ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना बहुत मुश्किल होता है, and this is also not very good name for getting a trademark done. उसके अलावा दूसरा कैटेगरी आता है वो मार्क्स जो डिस्क्रिप्टिव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं एप्पल। एप्पल एक सेब है और बनाता लैपटॉप है, ठीक है, फोन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ भी आप ऐसे नाम ले लें जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। कोडैक का एग्जांपल ले लेते, कोडैक को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता कि व्हाट ही इज डूइंग, बट आई नो उनका ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका है। सो कोडैक इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कैमरा, मैन्युफैक्चरर ऑफ फोटो पेपर्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिंटिंग पेपर्स, प्रिंटर्स एटसेट्रा। सो उनका जो नाम है उनके सर्विस टाइप को, उनके क्राइटेरिया को डिसाइड नहीं करता है। Okay, so I'll just show you a spectrum of what is the eligibility for trademark registration. नेम का स्ट्रेंथ के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। जेनरिक नेम हो गया बहुत सिंपल, लाइक मैं नाम रख लूं बहुत सिंपल, कुछ भी रख लो, ज्ञान रख लो, समथिंग ऐसा जो बहुत जेनरिक और कॉमन नाम है। वैसे नाम को रजिस्टर कराना बहुत डिफिकल्ट होता है, and I can assure you that it's next to impossible to get that name registered until unless you are a very old player in market. Like supposedly if you have been using that mark for many years, like probably 30 years, 40 years, etc., then it is quite possible to get that mark registered. Because let me remind you guys, in India, the rule is first to use rather than first to file. Always remember, in India, the rule is फर्स्ट टू यूज rather than फर्स्ट टू फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हमेशा जब भी आप ट्रेडमार्क लिटिगेशन करेंगे या ट्रेडमार्क में आगे प्रैक्टिस करेंगे, ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है, नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडमार्क स्ट्रेंथ। सो जेनरिक ट्रेडमार्क बिल्कुल नहीं, जेनरिक नाम सोचना ही नहीं है। डिस्क्रिप्टिव नाम फिर वही प्रॉब्लम आएगा रजिस्ट्रेशन कराने में। क्लास 9 के अंदर, सॉरी सेक्शन 9 के अंदर हमें रजिस्ट्रार से ऑब्जेक्शन आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा उसे आगे लेके जाना, ऑफिस एक्शन का रिप्लाई करना, दैट इज क्वाइट वेरी डिफिकल्ट टू गेट थिंग्स डन। बेसिकली ये सारी, उसके बाद हम बात करते हैं, आई विल जस्ट कंटिन्यू विद दैट, सजेस्टिव। ओके, तो सजेस्टिव सिमिलरली, नाउ आई विल जस्ट डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड टू फैंसीफुल। फैंसीफुल नहीं मतलब दो नाम को जोड़ दिया, कॉइंड मार्क्स, कॉइंड नेम्स जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जस्ट कुछ सोचा नया, एक चीज डिस्कवर कर दिया नाम, जैसे कोडैक हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक माय फर्म्स नेम विद इन एस, दो वर्ड का एमलगेशन है, कोई ऐसा पर्टिकुलर मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे नाम है जिनका कोई, जिनियोसा फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स है जो लेदर प्रोडक्ट्स में बैग्स में डील करती है। तो जिनियोसा जैसे एक ब्रांड का नाम लेते हैं, दे इट्स अ कॉइंड वर्ड नेम, ठीक है, and they actually made this word by combining two words. Okay, तो ये ऐसा चीज है कि जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा और इजीली रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका कोई प्रायर यूजर होगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चंस हम लास्ट में एड्रेस करेंगे, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ओके, I'll ask my team to keep the track and I will try to get all the question answered in the last. So before moving forward, मैं आप सब लोगों को एक चीज एजुकेट करना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लॉयर्स हैं या सीएस हैं जो ट्रेडमार्क के फील्ड में अपना प्रैक्टिस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ट्रेडमार्क एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप इनिशियल लेवल से ही अपना प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर सकते हैं। इंडिया इज एक्चुअली यू कैन कॉल इट इट्स अ न्यू बूमिंग हब फॉर स्टार्टअप्स। हर दिन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप एमसीए पे रजिस्टर हो रहे हैं, एंड जो भी मार्केट में काम करने आ रहा है, दे हैव टू गेट द ट्रेडमार्क डन बिकॉज नोबडी वांट्स कि उनका नाम कोई और यूज करे। सो सेफगार्डिंग बहुत जरूरी है भाई। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज यू कैन गेट अटैच विद द स्टार्टअप्स, एंड स्टार्टअप से अटैच होते ही आप उन्हें ट्रेडमार्क नेम सजेशन के लिए एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। Lawyers are getting paid at a very good rates at an amount of 1500 to 2000 rupees, ranging to 20,000 rupees at an hourly rate. So अगर आप ट्रेडमार्क का प्रेजेंटेशन बनाते हैं, लोगों को हेल्प कर पाते हैं कि कैसे आपको नाम डिसाइड करना चाहिए,
क्या क्या क्राइटेरियाज है जिसमें एक अच्छा नाम डिसाइड हो सकता है। यू कैन स्टार्ट माय फ्रेंड्स, यू कैन स्टार्ट योर बेसिक ऑफ ट्रेडमार्क प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे ओनली। ये एक चार्ट को हमें ध्यान में रखना है, जेनरिक, डिस्क्रिप्टिव, सजेस्टिव, आर्बिट्री, फैंसीफुल, कैसे ये चार्ट ग्रो कर रहा है और कैसे हमें फैंसीफुल नाम बनाना है। आई अंडरस्टैंड देयर वुड बी कंडीशन जहां क्लाइंट आपको बोलेंगे कि सर नहीं मुझे यही नाम चाहिए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड योर क्लाइंट्स थ्रू दी डिटेल्स एंड दी कंडीशन की क्या होगा अगर हम इस नाम के साथ प्रोसीड करेंगे। आपका काम है उन्हें बताना कि ऑब्जेक्शन आ सकता है, अपोजिशन आ सकता है। ऑब्जेक्शन और अपोजिशन के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे एंड आप लोग को समझाएंगे कि ये सारी चीजें क्या होती है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो हाउ टू प्रोटेक्ट अ ट्रेडमार्क। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमें ट्रेडमार्क फाइल करना होता है, सबसे पहले ट्रेडमार्क फाइल करने के पहले हमें क्लाइंट से उसके मार्केट का डिटेल्स लेना पड़ता है। लाइक वो क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या उनका काम है। लाइक वो लेदर बना रहे हैं, लाइक वो फर्नीचर्स बना रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, रियल एस्टेट चला रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं। इन सारी चीजों का डिटेल लेना बहुत जरूरी है क्लाइंट से, क्योंकि यही डिटेल हमें हेल्प करती है ट्रेडमार्क का नीश क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई करने में। याद रखिएगा, ट्रेडमार्क का नीश क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक बार नीश क्लासिफिकेशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमें कॉम्प्रिहेंसिव सर्च कंडक्ट करना पड़ता है ट्रेडमार्क के लिए, जिसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद हम ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन भरते हैं। इफ ऑल गोज गुड, विद इन 9 months to 12 months यू गेट योर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट फॉर योर क्लाइंट, एंड वो 10 साल तक वैलिड होता है। 10 साल के अंदर अंदर आप लोग को ये सर्टिफिकेट रिन्यू करना पड़ता है। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, 10 years के अंदर आपको ये 10 years के बाद आपको 1 month का एक यू गेट अ शॉर्ट टाइम ऑफ बफर स्पैन, आपको उस बफर स्पैन के अंदर इसे आपको रिन्यू करना है। हमेशा याद रखिए, ट्रेडमार्क जो है वो टेरिटोरियल होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडमार्क बाकी कंट्रीज में रजिस्टर हो, तो इसके प्रोसीजर है, या तो आप इंडिविजुअली उस कंट्रीज में फाइल कर लें। सेकेंड प्रोसीजर है कि मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू, यूजिंग दी वाइको वेबसाइट यू कैन फाइल योर ट्रेडमार्क बाय गिविंग दी बाय सबमिटिंग दी फीस फॉर द इंडिविजुअल कंट्रीज। याद रखिएगा, मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंदर लिमिटेड कंट्रीज हैं, और जो कंट्रीज उस प्रोटोकॉल की पार्ट है उन्हीं कंट्रीज में आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, कुछ लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं 10 साल से इस बिजनेस में हूँ, ये नाम यूज कर रहा हूँ, सडनली एक नया बंदा आके इसने मेरा नाम यूज करना चालू कर दिया, क्या मैं इसके प्रोटेक्शन ले सकता हूँ? डेफिनेटली आप इसके लिए प्रोटेक्शन ले सकते हैं। देयर इज अ लॉ ऑफ पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ ट्रेडमार्क जो है, उसके अंदर आप एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए भी सिक्योरिटी, आई मीन सॉरी, अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी वुड बी रॉन्ग वर्ड, यू कैन कॉल इट अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट के लिए आप एक केस डाल सकते हैं, कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। यू शुड हैव प्रॉपर एविडेंस, यू शुड हैव योर प्रॉपर यूजेज establishing कि आप प्रायर यूजेज हैं, एंड द पर्सन हु इज यूजिंग राइट नाउ इज actually a person who has started using the trademark after you. So ये सारी चीजें हमें दिखानी जरूरी होती है, एंड उनके बेसिस पे डेफिनेटली हम पासिंग ऑफ का भी केस स्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नीश क्लासिफिकेशन। सो ट्रेडमार्क जो होता है हमारा, वो क्लास 1 से क्लास 45 में डिवाइडेड होता है। ओके, एवरीवन रिमेंबर, ट्रेडमार्क हमारा क्लास 1 से क्लास 45 में डिवाइडेड होता है। क्लास 1 से 34 गुड्स के बारे में बात करता है, गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में क्लास 1 to 34 बात करता है, एंड क्लास 35 to 45 सर्विसेज के बारे में बात करता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, लीगल हो गया, आईटी हो गया। गुड्स में एनीथिंग मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर बना रहे हैं, सीमेंट का कोई सामान, कॉफी एटसेट्रा एटसेट्रा, एनीथिंग ऑल फॉल्स अंडर 1 to 34, एंड सर्विसेज में 35 to 45। ठीक है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेडमार्क जब भी फाइल करेंगे, नीश क्लासिफिकेशन ही हमें समझने में हेल्प करेगा कि हमारे क्लाइंट का ट्रेडमार्क किस किस क्लासेस में जाएगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे क्लाइंट का ट्रेडमार्क एक से ज्यादा क्लासेस में जाए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट आवर क्लाइंट्स ट्रेडमार्क कैन बी रजिस्टर्ड इन मोर देन 1 क्लासेस। So इसमें भी एक कैच है। So there is one catch that you have to identify what are the mandatory classes and what are the suggestive classes. So mandatory classes वो classes होते हैं जिसमें client directly काम करता है। Suggestive classes वो classes होते हैं जिसमें client का हो सकता है काम somehow
रिलेटेड हो ट्रेडमार्क, मतलब उस ट्रेडमार्क आई एम सेइंग समहाउ रिलेटेड हो उसके स्कोप ऑफ वर्क से। सो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बीइंग हिज अटॉर्नी कि हम उन्हें बताएं कि सर ये मैंडेटरी क्लासेस है, इसमें तो कराना ही कराना है, सो यू हैव टू गेट योर ट्रेडमार्क रजिस्टर इन दीज मैंडेटरी क्लासेस, but apart from that these are suggestive classes. In order to get an overall protection sir, you must get your trademark registered in this suggestive classes also. Also one more thing guys, please keep in mind, if you are getting your clients logo trademark, if you are getting your clients logo trademark, आप उन्हें suggest करिए कि logo के साथ साथ get your word mark also protected, get your word mark also protected, because that will help your clients to get the overall protection. प्रोटेक्शन हमें ओवरऑल चाहिए, क्लाइंट का नीड हमें ओवरऑल बचाना है, बिकॉज एक इन्फ्रिंजमेंट क्लाइंट के पूरे मार्केट को बर्बाद कर सकता है। नोबडी वांट्स टू गेट हिज मार्केट डिस्टरप्टेड, एंड इसी के लिए ये ट्रेडमार्क प्रोफेशनल का जो हमारा प्रैक्टिस होता है ये हेल्प करता है क्लाइंट को उनका ब्रांड इमेज, उनका ब्रांड रेपुटेशन एंड उनका मार्केट प्रैक्टिस बचाने में। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज दी वाइको वेबसाइट, जहां पे जाके आप आईपी इंडिया के थ्रू नेविगेट करके आप यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि इस क्लास के अंदर क्या फॉल करता है एटसेट्रा एटसेट्रा। इनको देख के ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका क्लाइंट का ट्रेडमार्क किस किस क्लासेस के अंदर रजिस्टर होगा। यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। I'll tell you a shortcut way also. There's a small way. You can just type in Google TM class list. Just type in Google TM class list. आपको आईपी इंडिया का एक प्री डिफाइंड एक्सेल शीट मिल जाएगा जहां पे आप डायरेक्टली भी रेफर कर सकते हैं, बट वो सजेस्टेड नहीं होता है। वंस यू बिकम एक्सपर्ट इन प्रैक्टिस, follow that practice, but right now since if you guys are beginner, go to WIPO niche classification and check on this website only. Okay, let's move forward. See, this is the IP India website. So इस वेबसाइट पे ही जाके आप ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क का कुछ भी आपको डाउनलोड करना है, स्टेटस चेक करना है, आप एप्लीकेशन फॉर्म्स डाउनलोड करना चाहते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, सब आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप जाए कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग सर्विसेज, यहाँ पे जा इस पोर्टल पे क्लिक करने के बाद ट्रेडमार्क का फाइलिंग सर्विस का पोर्टल खुलता है। इस पोर्टल पे क्लिक करने के बाद पब्लिक सर्च का पोर्टल खुलता है, जहां पे हम सर्च कंडक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कहीं कोई सिमिलर ट्रेडमार्क हमारे क्लाइंट से मिलता जुलता एग्जिस्टिंग है तो नहीं ना। अगर है तो हम क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं वाया सर्च रिपोर्ट, अगर नहीं है वी आर वेरी गुड टू गो। सो दिस इज द ट्रेडमार्क स्टेटस, जहां पे जाके हम देख सकते हैं कि ट्रेडमार्क का क्या स्टेटस है, अबैंडन है, डेटा सॉरी आई मीन फॉर्म फॉर्मेलिटी चेक हुआ कि नहीं हुआ, रजिस्टर हो गया या ऑब्जेक्शन में है, अपोजिशन में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस विल गाइड यू थ्रू ऑल दी डिटेल्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ this slide, this talks about basically when you want to conduct a comprehensive trademark search. ओके, इस साइट पे जा सकते हैं, वाइको का साइट है, यू कैन रीड इट थ्रू आईपी इंडिया वेबसाइट आल्सो। यहाँ पे जाके आपको क्लास लिखना है, किस क्लास में आप सर्च कंडक्ट करना चाहते हैं इन दिस पैनल। यहाँ पे जाके आपको टर्म यूज करना है एटसेट्रा, कहाँ सर्च करना चाहते हैं एटसेट्रा, यू हैव टू डू दैट। डेटाबेस आपको जहाँ का चेक करना है। दिस इज फॉर एन कॉम्प्रिहेंसिव सर्च, this is at an advanced level, so we'll not talk about much this. So let's move forward to the trademark search report. So what is trademark search report? Trademark search conduct करना बहुत important होता है, because as you know, अगर trademark का similarity होगा, हमारा trademark object हो जाएगा by registrar and when it is sent for examination by registrar. So एक comprehensive trademark search करना बहुत जरूरी है, so as to avoid infringement and to ensure कि हमारे client का trademark 100% register हो जाए। Now, this is the Indian portal which you can navigate through the public search as I mentioned there. इस पोर्टल पे आपको जाना है, अपने ट्रेडमार्क का आपको पहले ही क्लास आइडेंटिफाई कर लेना है। यहाँ पे क्लास आपको मेंशन करना है, यहाँ पे वर्ड मार्क जो भी आपके क्लाइंट का ट्रेडमार्क है, वहां पे ऑलवेज ट्राई टू चूज स्टार्ट विथ की जगह कंटेन्स विथ। कंटेन्स विथ हमेशा चूज करिए, कंटेन्स विथ इज द बेस्ट प्रैक्टिस इन स्पाइट ऑफ स्टार्ट विथ। कंटेन्स विथ यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में चूज करिए, यहाँ अपने ट्रेडमार्क का नाम लिखिए और सर्च कंडक्ट करिए। सर्च कंडक्ट करते ही आपके पास एक पूरा एक्सेल शीट आ जाएगा, जिसमें आपसे सिमिलर कोई ट्रेडमार्क होगा तो इन लिस्ट होगा, नहीं होगा तो नो सिमिलैरिटी फाउंड लिखा के आएगा। So this is the procedure for conducting the trademark search. Apart from this, you should also do a trademark domain search, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो डोमेन पहले से एग्जिस्टिंग नहीं हो, आपने क्लाइंट का ट्रेडमार्क करा दिया, नाम रजिस्टर करा दिया, उसका डोमेन ही उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या फायदा, वो आदमी बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज आज के डेट पे एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द ऑनलाइन प्रोटोकॉल। सो ट्रेडमार्क डोमेन सर्च
is also very important. And I suggest all the guys to do the trademark domain search also. Moving forward, see, as I talked about, starts with, contains with, matches with. So the best practice is contains with. Matches with भी करना चाहिए, but best practice do the contains with. You can matches with में आपको phonetically same मिल जाते हैं, जो हो सकता है आपके नेम की तरह similar हो या sound करते हो, etc. etc. So this is also best practice, but the best practice is contains. Okay, हमेशा contains लिख के trademark search करें and always try to move ahead with that. Moving forward, about the trademark filing in India. So I hope everybody is with me. Before moving forward, I have a question and answer round for you guys. I'll ask everyone कि हर कोई एक fanciful name लिखे जिसका कोई मतलब नहीं निकले, and you think that can be registered as a trademark. Everybody, please type in the chat box. Please come up with some coin names or something which you think that would be a fanciful name and it has a high probability of getting a trademark registered. I'm seeing a bunch of wonderful names. Monica, there's a suggestion, personal suggestion, because I've been in practice for some time. Try to avoid symbols when deciding the name for the trademark. Mons and Mix, try to avoid symbols. Okay. Anrish. See, Anrish and Soham are actually quite phonetically same and generic words. This sounds similar to Ambrish or maybe some other generic names which people are using. Sohum, Sohum. So it sounds similar to Soham. So maybe other similar names also. So these names you may face actually quite a difficulty while getting this trademark name registered. I'd like to see more names. Yeah. Varun Jasti is a very generic name. Okay, let's move forward. I think so. Everybody has got a grab of what I am trying to explain them. Okay, somebody asked why should we avoid using symbols? Because basically it doesn't come under the best practice. If you'll read the trademark manual, it is suggested that avoid symbols, avoid letters like star marks or maybe brackets or something. So it doesn't come under best practice. So this is the main reason we ask clients not to use symbols or brackets or you can call it emojis, etc. Okay, let's move forward. Yeah. So now, if you want to file a trademark for your client, there are two ways to get a trademark file. The very first way is using your client, creating your client user ID on the IP India website, and using his credentials, you can file. The second way is by getting yourself registered as trademark agent or trademark attorney on the IP India website, submitting the required documentation which they ask for, and become a trademark agent or attorney. And so these are two ways in which you can sign into trademark portal. After signing into trademark portal, you will get a view of something like this. The website will look like this. In the above this area, you will be able to see your details. I have hidden my details because you understand data and privacy, guys. So let's move forward. Yeah. So in order to file a new trademark, you have to click here in the new form filing. Then you have to click here on TMA. After clicking on TMA,
select the type of the company, that is an individual sole proprietor, whether it's a startup, small enterprise or other. So startup means a company which is identified under the Startup India and has a DIPP certificate recognition. Okay, so it's not like कि मैंने company आज चालू किया है तो ये startup है. Startup is only that company which is recognized by government, has been given DIPP startup recognition. Okay, let's move forward. Choose the type of the company. After that, ये एक ऐसे करके एक फॉर्म आएगा where there are multiple options कि आपको किस तरह से ट्रेडमार्क करना है. Let's start with the basics. Supposedly अगर आपके क्लाइंट का ट्रेडमार्क मल्टी क्लास में जा रहा है, सेलेक्ट मल्टी क्लास और जस्ट सेलेक्ट द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन. बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सेलेक्ट करें और हर क्लास का एप्लीकेशन इंडिविजुअली फाइल करें. आप एक साथ भी सारे क्लास का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, बट इट डजंट कम्स अंडर बेस्ट प्रैक्टिसेस. बेस्ट प्रैक्टिसेस में हमेशा आप हर क्लास का ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन इंडिविजुअल. मूविंग फॉरवर्ड, ये इस तरह का फॉर्म आएगा जहां पे आपको इस जगह पे एप्लीकेंट का डिटेल्स भरना पड़ेगा. ठीक है, एप्लीकेंट के डिटेल्स भरते ही यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएंगे, ब्रांच वगैरह एक्सेट्रा. कैटेगरीज आपको सेलेक्ट करना है, वर्ड मार्क है, डिवाइस मार्क है, क्या है, ट्रेडमार्क का एक्सप्लेन करना है, डिटेल्स XYZ. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको मेंशन करना है कंडीशंस और लिमिटेशंस एक्सेट्रा. उसके बाद इस जगह पे आपको क्लासेस मेंशन करने हैं कि क्या क्या क्लास में ट्रेडमार्क कॉल करेगा. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. अब तो मैं आप बोल लेना कि मैं उसमें सेशन, सॉरी टू डिस्टर्ब. सो व्हाट हैपेंस इज दैट यहाँ पे क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपका ट्रेडमार्क किस किस क्लासेस में फॉल करेगा. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रपोज टू बी यूज या फ्यूचर से यूज हो रहा है. अगर अभी आप तुरंत यूज करने वाले हो तो प्रपोज टू बी यूज्ड है. सपोजिटली 2 साल 5 साल 20 साल से यूज कर रहे हो तो ये वाले पे टिक करना और यहाँ पे लिखना है कि कब से यूज हो रहा है. कोई स्पेशल स्पेसिफिकेशन है यहाँ आप मेंशन करना चाहते हो कि पहले से एक क्लास में रजिस्टर है, फर्दर दूसरे क्लास में करा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो. आफ्टर डूइंग एवरीथिंग यू हैव टू डू हियर डिजिटली साइन एंड सबमिट. डिजिटली साइन एंड सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना है एंड बोला योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इज रेडी. You will get a trademark application number and your form will be submitted for formality check. Okay, पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको जाना है पे पेमेंट वाले टैब पे, मेक पेमेंट वाले टैब पे आपको क्लिक करना है. ठीक है, यू विल गेट अ रिकॉर्ड, जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा. यू हैव टू सेलेक्ट योर फॉर्म, मेक अ पेमेंट. वेरी सिंपल प्रोसेस. ऑलवेज रिमेंबर ट्रेडमार्क फाइल होता है. That's a very important thing. Trademark, if you need to file a trademark, you have to use Internet Explorer, and if you want to make payment, you have to use Chrome. So it's a very hectic process. First, you have to use Internet Explorer for filing, because trademark filing cannot be done on any other software other than Internet Explorer, and payment cannot be done on Internet Explorer. For trademark payment, you have to navigate to Chrome browser, and you can make payments only through the Google Chrome browser. Okay, let's move forward. Yes, Monica. Logo और shape of the trademark. The procedure is very simple. The procedure is same. Starting में खाली आपको select करना है जो criteria वाला एरिया था कि आप क्या फाइल कर रहे हैं. Procedure कुछ भी आप फाइल करेंगे, लोगो हो, सर्विस हो, स्मेल तो इंडिया में होता नहीं definitely. So any kind of trademark you are filing, which is a comprehensive trademark or multi-class trademark, anything, procedure same है. Choose your type, fill the form. The procedure of filling the form is same for everything. Okay, now moving forward, like supposedly what happens, we'll come back to this slide later. Let's move forward. So what happens? So this is the actual procedure of how to file a trademark. First you conduct a search, then you fill the form. After filling the form, your form is sent to registrar for examination. If there is some error in the examination, registrar will give you notice. If there is no error, then your form will be submitted in the trademark journal and will be published for 4 months. So in this time span of 4 months, the third parties have option to oppose your trademark, file an opposition notice, and you can file a counter opposition notice in order to safeguard your trademark. If this process is done very speedily, and if you don't fall under any criteria or scrutiny,
Then after the time period of approximately 9 to 12 months, you will get your trademark certification done. Let's move forward. So this is the flow chart. If anybody wants, he can take the screenshot of the flow chart. Okay. So if it is accepted, publication in journal, invitation for opposition. If opposed, if not opposed, this procedure. So this is the whole system in which the trademark is filed. Let's move ahead. Now, what is trademark objection? So always remember there are two stuffs, trademark objection and trademark opposition. Trademark objection is done by registrar. Trademark opposition takes place when your trademark gets published in journal and the third parties are allowed to oppose your mark if they think that if they are sure that your mark is capable of infringing their mark. Okay, so trademark objection basically two grounds pe hota hai mainly. There are other grounds also on which trademark objection can be raised, but mainly there are two grounds, that is absolute and relative grounds. So we'll talk about the absolute grounds of the refusal, that is section 9. ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, ओके, आपका मार्क जो है आपके सर्विस और आपके डिटेल्स को एक्सप्लेन करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपका शेप है वो somehow restrictive in nature है. So these are the probable criteria under section 9. You can refer to Bear Act also, the list is given there, under which the registrar can raise an objection and आपको उस objection को फिर reply करना होता है stating कि आपने जो object किया है वो गलत है, and these are the explanation that is which showing that my trademark is unique and shall be allowed to be registered. Okay, what are the relative grounds? Relative grounds हो गया कि जहाँ पे actually somehow कोई relation है, direct आपका infringement नहीं है. Like for example मैं आपको एक देता हूँ, few में है तो अमृत धरा and लक्ष्मण धरा. It's a very famous case in which it was suggested that कि अमृत धरा और लक्ष्मण धरा is actually causing a possible confusion in the minds of the consumer. So basically यहाँ डायरेक्ट कंफ्यूजन नहीं है, बट एक कंफ्यूजन समहाउ क्रिएट हो सकता है. So that's the relative confusion. So उन क्राइटेरियाज में जो आपका ऑब्जेक्शन होगा रजिस्ट्रार के थ्रू, वो आपका सेक्शन 11 में फॉलो करेगा. Let's move forward. Okay, so now we are done with the basics of the Indian trademark filing, and we can move forward with the trademark filing in US under USPTO, that is United States Patent and Trademark Office. Okay, so in order to file a trademark under USPTO, the procedure is very simple. You have to navigate the website, and actually there is an form called TEAS form. It has two types, standard and plus. So TEAS means Trademark Electronic Application System. Okay, so this helps you to file the trademark depending upon the requirement of the client. The procedure is same as India. Go to USPTO website, conduct the search, take the do the niche classification. Okay, identify what all classes does your trademark fall, inform your client these are the classes in which your trademark is filing, draft your trademark application and submit it. Always keep in mind, if you want to file a trademark application in US, you need to get registered with USPTO. Okay, but there is also a loophole. If you want to file a trademark for consumers who are based in US, only for US, those who are residents of US, you can do in a way that you can tell them, sir, I'll create your profile, and you can use a client's profile to file his own trademark application. So that's a loophole in which you can file a trademark application for US clients without getting yourself registered with the US Trademark Office. And trust me, guys, these application, these stuffs has a very huge amount of the payment. In India, you won't believe, getting your trademark searched, people are ready to pay 3,500 rupees per class per mark. For trademark filing, you can charge up to rupees 7,000 to
40,000, depending upon the type of the industry or the type of the client you are dealing with. For trademark objection, you can go up to whooping amount of 10,000 to 15,000, depending upon the severity and the importance of the case. For trademark opposition, you can go up to 20,000 to 1 lakh. So these are the ways of earning in which you can directly earn. In India, there's a huge platform. You can register yourself to BARC network. You can go to LinkedIn. You can directly communicate with the startups over there. You can use Startup India website. You can use Y Combinator website. You can go to Upwork. You can go to Fiverr. You can go to Freelance Network. So there are many huge amount of the work in the market. And trust me, guys, it's a very simple practice. Only you have to do is learn the basic details, go through the details. And trust me, guys, you can do it. There's no age barrier, nothing. There is way, and definitely you all can establish your trademark practice in a very, I should suggest, in a very good way and a very professional way. All you have to do is that pay attention to the small details which we have gone and navigated you today in the today's session. So let's move forward. Okay, so let's talk about in the US. There are two criteria, as I mentioned: intent to use and use in commerce. Intent to use mean कि trademark अभी use करने वाले हैं, use in commerce mean कि पहले से use हो रहा है. The rules are simple in the common law countries. Okay. So yeah, guys, these are the steps which are involved in the trademark registration under USPTO. Everybody would like to take a screenshot of this. Please go ahead. Everybody, don't be disheartened. We'll address your question at the end of the session. My team is coordinating and they are collecting the record of all the questions. So if I have missed someone, you can also directly connect me on my LinkedIn and I'll be happy to help you there. Okay. So has everybody taken screenshot of this? Can we move forward? Okay, so before going to question and answer session, I have a very small question, or I should say exercise for you guys. Okay, all of you guys, please answer me. What is the best practice for selecting the criteria for doing the trademark public search? Is it match with, contains with, or starts with? I'd like to repeat my question. What is the best practice while doing the trademark public search? Is it match with, contains with, or starts with? Everybody, please write the answer in the chat box. Wow, I'm seeing numerous of correct answers. That's great. Okay. Okay. There's one more question for you guys. How many sections are there? Sorry, how many classes are there under niche classification? How many classes are there under niche classification? Great, great, great. I'm seeing too many correct answers. Definitely. Congratulations, guys. Okay, the next question. Supposedly, I am running a law firm. Under what class my trademark should fall? Supposedly, if I am running a law firm, under what class my trademark should fall? Everybody, please write the answer in the chat box. Service class, I understand. I want to know under which class? Class 32, class 34, 35, 36, 37, 38, specific. Kaustubh, congratulations. Congratulations for the correct answer. Kaustubh has given the correct answer. Okay. See guys, इसलिए मैंने ये question answer किया. You have to open the niche classification. Niche classification आप खोल के देखिए. Can anybody open the niche classification for me and share the screen?
Can anybody from EduLaw? Or just wait a second. I'll just open it myself. Let me stop my screen share and let me open it. Guys, see, class 45 legal services. So if I'm running a law firm under which class which will be my class? So it will be class 45. So we'll do one more exercise. Okay. Supposedly, if I'm a manufacturer of a beer, tobacco, a clothing brand, and games. If I'm manufacturer of clothing brand, beer, tobacco, and games. Everybody, under what all classes my business will fall? I want to know all the classes. Everybody, listen to my question. Games, tobacco, beer, games, tobacco, beer, clothing, games, tobacco, beer, clothing. Multi-class is the right answer, but what are the classes? I can see some correct answer, but there is a catch. You guys are missing something. See, I'll tell you the correct answer. The correct answer is class 25 for clothing, class 28 for games, class 32 for beers, and class 34 for tobacco. One more question. Has anybody thought about suggestive mark? Suggestive class. See, इनमें क्या होगा, हम क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे, सर आप क्लास 33 में भी कराइए अल्कोहलिक बेवरेजेस. हो सकता है आज आप बियर बना रहे हो, कल को आप कुछ और अल्कोहलिक बेवरेज भी बनाओ. सजेस्टिव क्लास, ऑलवेज रिमेंबर, मिलता जुलता चीज के लिए सजेस्ट करना. क्लास 25 में क्लोथिंग है, क्लाइंट को सजेस्ट करो क्लास 26 में भी कराओ, लेस, एम्ब्रॉयडरी, रिबन. क्यों? क्योंकि वो सजेस्टिव है. ठीक है, very good, Custard. Class 35, that is what I was looking for. Office function, business administration, very important. Supposedly online platform से sell कर रहे हैं, तो class 42 scientific and technological services. इन सारी चीजों का ध्यान रखें. पूछो, ask questions from me कि सर आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो. I'm your client. Very good, Custard. Good going. Okay, let's move back to presentation. Just a second, guys. Let me share my screen. Yeah. Now we can start with the question and answer session. Okay. I'd like to ask someone from EduLaw or Navjot if you can coordinate. Let's take up the question and okay. Navjot or Vishu would be taking the sessions. Kamlesh, hi, hello. I'm audible, Kamlesh. Okay, I've got the list of the questions, so I'll be addressing those questions. Okay, the very first question is, how long does registration process take? So basically there are two procedures. One is expedited procedure, under which you can get the registration done under probably 4 to 6 months. The second procedure is normal procedure, which takes around 9 to 12 months. The second question, what will be the remedy available for the client if the trademark is infringed, and where we need to file the case? If the trademark is infringed, you can file the case at the district court or high court. Okay, you can also file an opposition at the time of the journal publish when the journal publishment of trademark is done. Okay,
Sir, can you please type the case name here in the chat? I exactly don't remember. We have talked about many cases today. You can refer to my LinkedIn profile. Talk to me. Sir, there is a one more question from Kartik Sharma. He wanted you to explain the generic part once again. Generic part. Okay, so Yes. can ask her to switch on her camera and we can have a one-on-one session. Kartik, if you are there in the meeting, you can switch on your camera and can ask to sir. Kartik, are you there? Okay, let's. I think so. Kartik is not there. Let's take Kartik is there. After that, let's take for MAS Redmi. The hand has been raised. Yeah, Kartik, please tell. What's your doubt? Let's move forward. So we have Kartik. Kartik, do we have you with us? Yes, I am here only. Am I audible to you? Yeah, you're audible. Please tell me your doubt. So I was just asking, what should be the generic? If I can infer that if you say that a generic, that the trademark should not be generic. Okay, so that means it should not be a common word or common name, right? Definitely. Okay, that's what I wanted to know. तो बेसिकली मैं आपको एक बार सबको रिकैप देता हूँ, ये क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेडमार्क का नेम जब भी डिसाइड कर रहे हैं, होता क्या है, अगर ट्रेडमार्क के नेम को जेनरिक रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो। सेक्शन 9 के अंदर आपका ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा रजिस्ट्रार से। Generic names are not allowed to get registered. Always try to come up with coined words जो आपके सर्विसेज को एक्सप्लेन नहीं करता है। Okay. Thank you so much for explaining. Some Utkarsh came up with it. I searched for Banta as a trademark, but it was already registered. I think it's generic name. See, I am going with your word, Utkarsh. I haven't done the trademark search for Banta, but if you are saying it's registered, see, there are scenarios trademark generic name has been registered. For example, Agarwal Sweets Lelo registered. There are many other names also where there has been registration based on the fact that they have been a very prior user of that name. So there are special condition criteria where they can be registered, but when we are talking about the best practice, like for example, आज मैं एक नाम लेके आता हूँ कॉफी मग्गा, ठीक है, generic name है, registered नहीं होगा. You understand? Suppose if I come with a new name चाय पतली, ठीक है, कुछ meaning नहीं है, but somewhat generic है, chances है कि वो registered नहीं हो. So always try to come up with names and words which are innovative. They don't explain your services. Suppose मैं चाय पतली बोल के चाय बेच रहा हूँ, 100% रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 9 क्लियरली बोलता है कि आपका सर्विस आपके काम को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए. फिर आप बोलेंगे सर सिनेरियो है जहाँ पे लोगों के ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुए हैं. यस, इट इज रजिस्टर्ड. स्पेसिफिक केसेस होते हैं जहाँ पे हो जाता है, बट इन बेस्ट प्रैक्टिसेस इट इज नॉट सजेस्टेड. Sir, there is a So, one sir, more if a question company is put real- forward by Bhagyasri. Sir, the question is, that if a company is not a real, if is not real estate renting resort and all, can they proceed with registration of the mark, the villa? See, the villa is a very generic name, Bhagyashree. So there is a very least probability that you can get this name registration. But for example, अगर हम एक नाम रख देते हैं विला वाला और उसमें हम खाना बना के बेच रहे हैं, there is probability कि हम registration मिल जाए इस name पे कि हम खाना बना रहे हैं और विला वाला का खाने से कोई registration relation नहीं है. Sai Sutta Bar is registration for chai only. Chai Sutta कौन सा है? Registered for chai. Yeah, so I told you. So basically, there are scenarios जहाँ पे register हुआ है, but if you refer to the sections given below,
वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है आपका कि आप जेनरिक नेम को रजिस्टर नहीं कर सकते एंड इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, बट यू नो देयर आर सम सिनेरियोज, देयर आर एक्सेप्शंस जहां पे रजिस्टर होता है. ओके, व्हाट इज द Sir, डिफरेंस there बिटवीन is अ a one ट्रेडमार्क? more question. Sir, there is a one more question by someone who is asking that what is the difference between trademark and a copyright? ओके, सो बेसिकली ट्रेडमार्क ब्रांड नेम का होता है, कॉपीराइट आपका लिटरली वर्क का होता है या आर्टिस्टिक वर्क का होता है. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड and let's finish the today's session. I think so we have answered all the questions. Generic name also means god name. हाँ, generic name के अंदर god name आ जाता है, वो generic criteria है, well known हो सकता है. So when we get TM name, तो basically आपका application नंबर आते ही आप अपने नाम के आगे TM लगा सकते हैं. जैसे ही आपका सर्टिफिकेट आ गया, get R sign up आगे लगा देना. How do you become an IP attorney? Get your LLB done, get a proper IP training done, and boom, you are ready to be IP attorney. Thanks for certain modification in logo. Yeah, definitely. Registration होने के बाद भी modification के लिए एक sentence 4 years TM registration. This law has to be applied again use same, or there are any other ways I can just make it correct. See, I'll just tell you, register होने के बाद आप लोगों को modify कर सकते हैं. There's a miscellaneous form जिसके help से कर सकते हैं. But there is also a form for amendment also जिसके थ्रू आप correction कर सकते हैं by proper government की. Subject to आपका वापस से सारा examination everything होगा, formality check pass होगा. If everything goes good, then and there only आपका ये procedure complete होगा. Thank you so much, sir, for this session. Yeah. For Kamlesh, more questions, please reach to my LinkedIn profile. Okay. So after this, we'll be explaining in detail about our trademark course. hi Kamlesh, please. Hello, I'm audible. Yes, sir, you are audible. Yes, Kamlesh. Hello. Yes, you are audible. No problem. I'll take it from Yes, here. sir. You guys can mute your mic. Okay. So further, we'll be talking about the details of our trademark course in the next slide. Okay. So we are now coming up with the course on a certificate course on trademark law and practices in India. The duration of the course would be for a month. We will be having 3 classes per week, 2 mentoring session and 1 doubt clearing session. Okay, all the classes would be scheduled for approximately 1 to 1.5 hours. All the classes would be in a way that all the working professional, college going students, etc. can attend the sessions. We'll try to keep all the classes in the evening hand only. And so these are the course content details, all the details which will cover up in the trademark course. So as we talked about today, so it was a very brief session. So in this course, we'll talk about, give you the very detailed introduction about the trademark law. We will help you to guide through the prominent case laws. We will help you to understand all the classes, and we will help you to understand all the sections, relevant sections which are related to trademark laws in India. Okay, we'll talk about how and why it is important to create a trademark strategy, because my friends, trademark strategy is the only thing which can help you through a seamless and hassle-free procedure. If you guys have a good trademark strategy, trust me guys, you can have a very good and a hassle-free overall registration process for your client. In the module 3, we will talk about introduction to digital signature certificate, that is DSC, and creating account on IP India website. Trust me guys, it's a very hectic task, requires a small amount of coding. You have to get your digital signature certificate done from MCA website. You have to configure your digital signature certificate. You have to configure your internet browser. You have to do some modifications, etc.
then only your browser becomes eligible for filing the trademark. Guys, remember one thing, it is very difficult to file trademark in Windows 11. So I suggest all the guys who are seeing future in trademark law, please return back either to Windows 7 or Windows 10. Okay. In the module 4, we'll be teaching you how to create search, how to identify the trademark classifications, how to create a search report, how to create the probability of getting the trademark registered. Okay, so these are very important things which you need to learn before filing the application, because this is the thing which will help you to understand whether there is a chance of moving forward with the case or not, whether there is a probability your trademark can be registered or not. Because supposedly if you get your trademark, client's trademark register, client's trademark filed, and later stage there is an objection from the registrar, I'm sure your client's gonna ask you कि sir आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि पहले से इसमें एक similarity था. So it is your responsibility to conduct the trademark search report for your client. And trust me guys, trademark search report is very important if you want to get your trademark registered. And this is the way, guys, I'm telling you, this is only the way in which you can establish your trademark practice. It's a very easy way, very easy part, requires a small amount of concentration and a good amount of hard work. And trust me guys, boom, you'll be a very good trademark lawyer. So module 5, we'll be talking about the trademark filing in India. The whole detailed procedure will give you a live example. We'll show you filing a trademark live. We'll address each and every doubt, each and every form. We'll teach you to fill how the form in details. We'll teach you the best practices while filling the form, etc. We'll also help you to configure your computers for getting ready for the trademark practices. In the module 6, we'll talk about the trademark prosecution and mistake reform. Trust me guys, trademark India में जो trademark applications होते हैं, thousands of trademark applications are filed in India. I should say lakhs of trademark applications, but 60% of the trademark applications gets rejected. Sorry, gets objected by registrar. You know why? Because lack of proper trademark search report. फिर आप उसे बचाएंगे कैसे? एक proper office action का reply देके. That is very important to learn how to file a proper reply, how to draft a proper reply for trademark objection by registrar. And I'll also teach you guys how to move ahead if there is a case of trademark opposition. How to move ahead if there is a case of trademark opposition, because guys, जब आपका trademark 4 महीने के लिए जर्नल में पब्लिश होता है, there is an opportunity कि थर्ड पार्टी आके आपके trademark को ऑब्जेक्ट करे. ठीक है? I mean sorry, oppose करे. My mistake, oppose करे, not object. Okay. So this is the whole detailed module which will be covering in our trademark course. The assessment will be 40 marks for trademark class presentation. Each and every student will have to make the trademark class presentation. We'll be assigning topics to you. We'll be allotting you hours, 5 minutes or 10 minutes of the time to, so that कि आप practical knowledge समझ सके. एक client culture जो है trademark का presentation देना, live practical experience को समझ पाए. ठीक है? 20% में आपको एक बेसिकली टास्क असाइन होगा जो आपको कंप्लीट करना है, लाइक ट्रेडमार्क सर्च करना होगा. विल असाइन यू विद ट्रेडमार्क सर्च, विल असाइन यू विद आइडेंटिफाइंग नीश क्लासिफिकेशन एटसेट्रा. प्रैक्टिकल टास्क आपको असाइन किया जाएगा. ओके. एंड लास्ट 20% विल बी रिटन एग्जाम. आपको रिटन एग्जाम देना होगा, प्रोबेबली इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. ठीक है? 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस आपको एड्रेस करने होंगे. रिमेंबर गाइस, इफ यू वांट टू गेट योर सर्टिफिकेशन, यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 60%. Okay, that is very mandatory, because guys, अगर आप 60% score करें, then I understand that you guys are paying attention in the class. Definitely, I'm here to solve your doubts. कोई भी doubt हो, you can feel free during the course. Okay. So basically, जो हमारा trademark course है, वो basically उसका price जो होगा हमारा, that will be 8,999. The price for the trademark course will be 8,999, but only for first 50 registration, we are giving for 3,999. We are providing flat discount to all the early bird registration who are going to get their registration done. All the guys who wants to get their registration done, the form link is shared in the chat. Guys, I'd ask ki moderators, please form link को chat में pin up कर दें, so that everybody can go and fill the form right now. Those who are interested, they can join our trademark session, get an instant discount for only for first 50 registrations.
We would be giving 5 to 10 minutes of the time for all the interested students जो register करना चाहते हैं. Guys, this is the best opportunity. This is the pathway in which you can create your trademark practices. Trust me, guys, 4,000 amount. ये जो फीस है आप एक सर्च करना करके या एक बेसिक क्लाइंट प्रेजेंटेशन करके ही आप इस फीस को निकाल सकते हैं. It's not a very hectic fees, and trust me, guys, this course will guide you through overall trademark procedures. Kamlesh, I'd like you to please pin up this message in the chat. Guys, you can refer to given in the chat. Sir, Form. You have to fill a basic amount of rupees 500 fee as a registration cost. Okay, all the details are given in the form. All the users who are interested can show their early bird registration, only available for first 50 registration. You have to pay a small amount of rupees 500 for getting yourself registered. Our team will then connect you and guide you through the overall procedure.